हमारी शोभा यात्रा विश्वविद्यालय के ध्वज के साथ इस हाल में सभागार में प्रवेश कर रही है। आप लोग स्वागत करें। देवरच्याचार्यो अंतेवासिन मनसास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्दनमाहृत्य प्रजातन्त्वं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव देवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोमास्यानि हरे ॐ मा भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभद्रजतराः स्वेरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तरो प्रभ्यसेम देवहितं जरायुः सतमिन्नो सरदो अन्ते देवा जतरान्नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारी विकृता युर्गन्तो आदित्यद्योरादितिरन्तरिक्षमादित्रमाता स पिता विश्वे देवा आदिते पंचजना आदित्रजातमदित्रजातम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिक्षतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार। सुमधुर मंगल वंदना और आपकी तालियों के बीच डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह की गौरवशाली विद्वत शोभा यात्रा का सभागार में आगमन हो चुका है। पूरे सदन से अनुरोध है कि आप सभी अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान हों। सम्माननीय अभ्यागतों और विद्यार्थियों, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अकादमिक गौरव के इस उत्सव का साक्षी बनना हमारा परम सौभाग्य है। मैं सबसे पहले माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, गौर अतिथि महोदय, कुलपति महोदया और कुलसचिव महोदय से मां सरस्वती एवं उनके वरद पुत्र ज्ञान ऋषि हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरिसिंह गौर की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही माननीय अतिथियों से अनुरोध है, मंच पर रखे गए तुलसी, जासौन और इंसुलिन के पौधे चितकर कुलपति महोदया के पर्यावरण संरक्षण के अनुपम संकल्प को अपना संबल प्रदान करेंगे। संगीत के विद्यार्थियों से सरस्वती वंदना के लिए निवेदन।
भवानी वीणा वादिनी भवानी वीणा वादिनी भवानी जगत व्यापिनी भवानी जगत व्यापिनी भवानी वीणा वादिनी भवानी सत सुरण तीन राम नायक सत सुरण तीन राम नायक आए स्वर सोहराय आए स्वर सोहराय भवानी वीणा भवानी वीणा भवानी शीश मुकुट कंठ माल राजे शीश मुकुट कंठ माल राजे सुभग श्वेत अंबर तन साजे सुभग श्वेत अंबर तन साजे हंस वाहिनी भवानी वीणा वादिनी भवानी वीणा वादिनी भवानी जगत व्यापिनी भवानी जगत व्यापिनी भवानी वीणा वादिनी भवानी भवानी भवानी। धन्यवाद। ये थे हमारे संगीत विभाग के विद्यार्थी श्रुति वंदना के साथ। माननीय कुलपति महोदया की ये अभिनव परिकल्पना रही है कि इस वर्ष के दीक्षांत समारोह को हम पर्यावरण के लिए समर्पित करें और उनकी ये परिकल्पना कि विश्वविद्यालय की ज्ञान गरिमा की इस यात्रा में प्रकृति जगत का स्नेहिल छांव बना रहे। कुलपति महोदया का यह लगाव अभी हाल ही में विश्वविद्यालय परिसर में गौरैया के लिए उपलब्ध कराई गई गौर गौरैया आवासीय कॉलोनी के रूप में भी प्रकट हुआ है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना मिली है। यह हमारे विद्यार्थियों के लिए भी कुलपति महोदया का एक बेहद मानवीय संदेश है, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलाधिपति श्री कन्हैयालाल बेरवाल जी का स्वागत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत कर रही हैं माननीय कुलपति महोदय। अब मैं कुलपति महोदया से ही निवेदन करता हूं कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के अग्रवाल जी का भी स्वागत करें। इसी क्रम में कुलपति महोदया से अनुरोध है कि हमारे गौर अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर आरसी सोबती जी का भी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करें। अब मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर नवीन कांगो जी से अनुरोध है कि इसी रीति से कुलपति महोदया का भी स्वागत करें। अब कुल सचिव डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कुलाधिपति महोदय दीक्षांत समारोह आरंभ करने की अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। May I request Honorable Chancellor
to declare the convocation open. I declare the convocation open. I request Honorable Vice Chancellor Madam to deliver welcome speech and present the annual report. The Honorable Chancellor of Dr. Harisingh Gour Central University, Shri K.L. Berwalji, who is presiding over the program, our chief guest, Professor K.K. Agrawal, the President of South Asian University, New Delhi, Padma Shri Professor R.C. Sobti, Gaur Atithi of the Convocation, Honorable members of the Executive Council, Honorable members of the Academic Council, directors and deans, all officers, all retired teachers, alumni of this prestigious university, all respected dignitaries of Sagar, fraternity from print and electronic media, medal awardees, and all dear students, members of the university family, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in welcoming the august gathering on the occasion of the 32nd Convocation ceremony of our acclaimed university, Dr. Harisingh Gour, Sagar Central University. The entire university fraternity feels highly privileged by the presence of our chief guest, Professor K.K. Agrawal, the President of South Asian University, New Delhi, on this special ceremonial occasion. I extend a very warm welcome to you, sir. You have honored us by accepting our humble invitation. We express our deepest gratitude for your kind gesture. A wave of enthusiasm has spread its wings in the entire Vishwavidyalaya by your radiating presence. We are grateful to have with us Padma Shri Professor R.C. Sobti as God Atithi on this auspicious occasion of 32nd Convocation. Your very presence means a lot of meaning to us. A heartiest welcome to you. I am pleased to welcome our Honorable Chancellor, Shri K.L. Berwalji, for presiding over today's convocation ceremony. His constant support and invaluable guidance have always been a great help and motivation to take us forward. Dear guests, our university is the incarnation of the great tenacity and effort of great jurist, educationist, philanthropist, Dr. Sir Harisingh Gour. With his unparalleled determination and dedication, he turned this deprived region of Bundelkhand into a vast center of knowledge by establishing this university on 18th July 1946, which was later converted to a central university in 2009. The university has made some significant achievements during the last 1 year. Our colleagues, both teaching and non-teaching staff, and the students deserve heartfelt appreciation and a huge round for giving their best to the NAC process, due to which, for the very first time, the university was accredited with A+ by NAC. The university has taken steps to establish new programs and new courses, including UG in Physical Education and Sports, MBA in Hotel Management and Catering, Travel and Tourism Management, Healthcare and Hospital Management, new courses in engineering, that is Aeronautical Engineering, Dairy Engineering, Fashion Engineering and Apparel Designing, Food Engineering and Technology, in addition to the earlier ones, that is Computer Science and Electronics. The university has a special focus on skill development programs, character building, and Bharatiya knowledge system. These programs, courses will certainly contribute to add few more colorful university. Recently, in a special national function on APAR organized at New Delhi, the Union Education Minister, Shri Dharmendra Pradhanji, honored us for securing the highest percentage, that is 96.2% of digitalization of academic records of students available by any university in the country. And a news which is for my dear students. Can you imagine any university in India who will be uploading, they are already ready, the degrees which are being awarded today to you, they are available on DigiLocker.
Since today only, you can download your degrees, which are available on the DigiLocker, and for that, I express my gratitude to our examination section led by the Controller of Examination, due to whom this has been made possible. Under the mission mode, the university has remarkably implemented the Academic Bank of Credits, that is ABC, which is an important component of NEP. The university has developed 4 promos on NEP and 2 promos on ABC, which are well taken by UGC and are being used by other universities, higher education institutions across the nation. In tune with effective implementation of NEP 2020, the faculty members have also written textbooks in Hindi and regional languages, and 12 of our regional books were inaugurated on July 29, 2023, out of the 100 by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The university is in the process of expansion of quality infrastructural facilities in order to fulfill the academic and research needs of its stakeholders. Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi ji has virtually inaugurated the newly constructed buildings of Kautilya Bhavan, which is an integrated building of Departments of Criminology and Forensic Science, Fine and Performing Arts, and Library and Information Science. Annapurna Bhavan, which is an extension of the Department of Business Management, where we are running the Hotel Management Department, and Ranganathan Bhavan, which is an extension of the Central Library. The upcoming buildings of new Science Laboratory Complex, extension of English Department, extension of Pharmaceutical Sciences Department, and integrated building of Environmental Science, Indigenous Knowledge, and Communication and Journalism Department are in the final stage of construction and will be inaugurated shortly. I also feel very happy to inform that projects worth rupees 250 crores are in the offing, with new buildings for academic departments, health center, paramedical center, convention center, and a new sports complex with all facilities to our dear students. This meeting was held yesterday, and we have a very positive response from the Department of Education, and we may be having hostels with a capacity of 1,000 each for boys and girls in the near future, which the Ministry of Education has promised to us. The year 2023-24 has been vibrant with activities, and our university has achieved remarkable success in the field of academics, administration, and infrastructure. I wish to highlight some major achievements of our university. The university has been amongst the top contributors in NEP 2020 implementation and reform initiatives during the year, also contributing at the state and national level NEP 2020 implementation policies. EMMRC, that is our media center, produced 170 academic modules on various subjects in addition to 6 promos. Recently, a documentary film on the university was showcased on DD National under the series of Avenues of Excellence as a potential university of excellence of the country. The documentary film Tamura Tanle Bande of our university got 7 awards during the National Film Festival. EMMRC also developed CEC recognized series on Raj Bhasha Hindi, which was uploaded on the CEC portal, and it is available to all. 20 more courses for the undergraduate and postgraduate levels were developed. The use of ICT has been promoted in teaching learning activities. E-content and academic lectures available on Swayamprabha and e-Pathshala platforms are made accessible to the students. 93 seminars. If you look at our research output of the university during the last academic year only, 93 seminars, workshops, conferences were organized by the teachers, 350 articles, 65 book chapters, and 25 books were published by the faculty members. Some of our articles are published in journals of very high impact factors, including Nature with an impact factor of 64.8. In the Central Zone Vice Chancellor's meet held at Vikram University, Ujjain, the Vice Chancellor proposed to develop a sharing cluster of research facilities in the Central Zone, which was well taken and immediately accepted for implementation by the UGC chairman. 6 research journals of national importance are being published by the university, and I feel happy to share that 2 of our journals, Madhya Bharati of Humanities and Social Sciences and Natyam Journal of Sanskrit Department,
are included in the UGC care list. Research projects worth rupees 400 lakhs, that is 4 crores, were sanctioned to the faculty members during this year itself. The university has restructured its SIC, that is the Sophisticated Instrumentation Center, and set up 8 new instrument-specific research centers and centers for advanced research, which we commonly call as CAR. That is a Center for Advanced Research, and this CAR is making a very steady progress. I think it's running better than any of the cars which are running in India. Maybe it's going to meet the speed of Tesla. The Vice Chancellor and 4 faculty members of the university were recognized for their research caliber amongst the 2% scientists of the world, as per Stanford University Research Group's reports. The university is spreading its wings internationally as well. We are not confined to India only. A delegation of the university participated in AIU Bharat Nepal Higher Education Summit in 2024 during 14 to 17 February recently at Kathmandu University, Nepal, where lectures were delivered, and we also had a stall for the wide publicity of the university. As GB member of AIU, she visited various universities of Taiwan for effective collaborative international academic activities, and as a governing body member of IGSTC DST Government of India, she also visited Germany to promote Indo-German relationships. Keeping in tune with Fit India and the Physical Education Department is very vibrant with sports activities. AIU West Zone Handball Men's Competition was successfully organized, in which 54 teams participated, and incidentally, Dr. Harisingh Gour University was at the top of the list. International Yoga Festival was successfully organized. The students of Department of Music, Fine Arts and Performing Arts received 9 awards in AIU Central Zone Inter-University Competition. The UGC Malviya Mission Teachers Training Center, which was earlier known as HRDC, has organized 17 refresher courses, 2 faculty induction programs, 3 short-term courses, 2 NEP 2020 orientation and sensitization programs, 4 one-day NEP 2020 workshops, 4 one-day IKS, that is Indian Knowledge System lecture series, in which 1,924 participants from all over the country participated. Computer-based skill development workshops for staff were also organized throughout the year. Early detection of cancer and health checkup camps for all stakeholders of the university and common community was also organized by the university in collaboration with District Hospital and Regional Directorate of Health, Sagar. The government's prime running initiative right now, that is, you all know, that is the elections. Mera Pehla Vote Desh Ke Liye. In this also the university is pioneer, and it is successfully implementing this very initiative of the government to arouse greater voter awareness. 4 new units of NSS were established in the university, and students actively participated in cleanliness drive, COVID awareness programs, webinars, and Dana Pani program for birds. This is a very new initiative. I think I would like to mention to our honorable guests who are present here that we have started a new initiative in the form of Gauraya Residential Colony, which has been made by our students. It is a place of attraction where Gaurayas collect in large numbers in the mornings, or even up to 200 in numbers, when fed by our students and faculty. To inculcate a sense of cleanliness, initiatives like Mera Vibhag, Main Hi Savaru, here each and every member of the department participates in the overall maintenance of his or her department. The university has 69 active MOUs with different organizations for knowledge sharing and collaborative academic and research activities with academia, industries, Maha Regiment, which we recently did, and with the Police Academy is also in the pipeline. MOU monitoring committee to monitor the progress of these MOUs is also in place. The university system, how do we manage this entire system? So I would like to share with all of you that this entire university system is being managed through its effective governance, having chairpersons, directors, nodal officers for about 88 committees which are being implemented right now, 54 policies which are operational as on date. Waste Management Cell, Entrepreneurship Development Cell, Campus Beautification and Development Committee, along with many other cells and committees are fully functional. On the occasion, we do not leave our tiny tots also behind. Many of our mothers who are working here, maybe as a student, as a teacher, or as a non-teaching staff,
We have a daycare center here, and a children fair was organized on Children's Day, that is the 14th November, which also happens to be the foundation day of this daycare center, to attract the tiny tots of the university employees. Our family is growing. Nearly after 10 years, the recruitment process of the university is alive once again, having completed the recruitment of 54 professors, 93 associate professors, 31 assistant professors, 141 non-teaching staff, and we have recently advertised for 88 positions of assistant professors, and other non-teaching positions are in progress, thus continuing with the process of family expansion as per the dream of Sir Dr. Harisingh Gour. Above all, what is most beautiful of our university is a very beautiful scenic campus with high hilltops, plain tips and valleys, the clean, green and pollution-free campus, which is enchantingly attractive and ideal for a fit and healthy lifestyle. And all these achievements made by Dr. Harisingh Gour Sagar Central University in this academic year have been made possible by unparalleled determination, cooperation, and concerted hard work of the entire university family, to whom I owe my gratitude. Convocation is an event of wide acceptance of knowledge. It is a very special moment for all our students who are sitting here, when our students make efforts to apply the acquired education and knowledge in their day-to-day socio-cultural life. The university has given you the words and meanings, my dear students, and now you have to give a new warmth, a new dignity, and a new truth through your devotion and perfect actions. I feel very much contented to note that we have worked to the best of our ability with the complete upgradation of our university and students, whose sublime results have been placed before you. The university has bloomed with academic, administrative, infrastructural, research, extracurricular, sports, job placements, adopting digital initiatives, accompanied with a spurt in student and faculty achievements. The university caters to the nation's diversity, having right now students from 25 states of the country and faculty from 12 states involved in the teaching learning process. The university is perfectly in tune with the Government of India initiatives like Skill India, Startup India, Fit India, Unnat Bharat Abhiyan and Swachh Bharat Abhiyan, and have adopted all the UGC regulations. We are confident that the university will provide an enriching environment in all times to come, fulfilling the dreams of Dr. Sir Harisingh Gour, and will keep marching on and on and on the path of academic excellence. The need of higher education is not simply teaching and assessment, it is the skills you gain about how to learn. March on and fear not the thorns or the sharp stones on the life's path, as it is these who teach you how to face the challenges in life. On this auspicious occasion, I would like to convey my students that when you enter a greater social world, after getting a degree from here, keep your path illuminated with this Dikshantopdesh, which I am just reading out. Your learning experiences, knowledge, and intellectual attainments are the most sacred wealth of our nation. Use it in a manner befitting the honor and dignity of the nation, your mentors, and Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya Sagar. Make every effort in all circumstances to uphold the dignity of your profession, your alma mater, your family, and the integrity of your quality characters. Contribute through thoughts, words, and actions to bring about the well-being of common community. Live a well-disciplined, healthy life, and contribute significantly for the sustainable socio-economic development of Bharat. This Dikshantopdesh has been adopted by our Academic Council and Executive Council only yesterday. My dear students, it's your turn to choose and define what success means to you. Now, others will try to define it for you, but yours is the only voice that matters. Please raise your voice. Last but not the least, I would like to congratulate my dear students who have been adorned with various medals and titles on this dignified occasion of 32nd Convocation of the University. I believe that our students will become the flag bearers of this very university, that is Dr. Harisingh Gour Sagar University,
and will fulfill his dreams and will spread the fragrance of this university worldwide and act as strong pillars to contribute for Viksit Bharat, which is the dream of our Honorable Prime Minister. You believed you could. You believed you could, and you did. You believed you could, and you did. Now spread your wings and chase your dreams. Now spread your wings and chase your dreams. May you have the strength to face new challenges with confidence and the courage to live the life that you have imagined. With all good wishes to all of you and my gratitude to all our guests who are present here, I wish you all the best on this 32nd convocation of Dr. Harisingh Gour Sagar Central University. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Gaur. Thank you so much, madam, for your blessings and inspiring report. Now I request Director Academic Affairs to present the candidates for the conferment of the Doctor of Philosophy. All PhD holders may rise. Madam, I present unto you the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy of various schools, to which I pray those present may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present to their respective degree of Doctor of Philosophy and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Biological Sciences to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. I, Professor Varsha Sharma, Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Science in Zoology, Master of Science in Botany, Master of Science in Microbiology, and Master of Science in Biotechnology, and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Biological Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Chemical Sciences and Technology to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Science in Chemistry and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Chemical Sciences and Technology, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Engineering and Technology to present the candidate respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Technology in Applied Geology and Master of Pharmacy in various pharmacy specializations and graduate degree of Bachelor of Science in Geology
and Bachelor of Pharmacy in the School of Engineering and Technology and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Applied Sciences to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Science in Forensic Science, Master of Art in Criminology, Master of Science in Geography, Master of Art in Geography, Master of Science in Anthropology, Master of Art in Anthropology, and the graduate degree of Bachelor of Science in School of Applied Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here for your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Mathematical and Physical Sciences to present the candidate respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Science in Mathematics, Master of Science in Physics, Master of Computer Application in Computer Science and Applications, and the graduate degree of Bachelor of Science in Science, Bachelor in Computer Applications in Computer Science and Applications in the School of Mathematical and Physical Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Humanities and Social Sciences to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Arts in Philosophy, Master of Arts in Sociology, Master of Arts in Social Work, Master of Arts in History, Master of Arts in Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Master of Arts in Public Administration, Master of Arts in Political Science, Master of Arts in Psychology, Master of Science in Psychology, and the graduate degree of Bachelor of Arts in above subjects in the School of Humanities and Social Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate and graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Languages to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. महोदया, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को जो भाषा अध्ययनों में स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी, स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी, स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत, स्नातकोत्तर उपाधि भाषा विज्ञान एवं
स्नातकोत्तर उपाधि उर्दू तथा स्नातक उपाधि हिंदी, स्नातक उपाधि अंग्रेजी, स्नातक उपाधि संस्कृत, स्नातक उपाधि भाषा विज्ञान और स्नातक उपाधि उर्दू में वर्ष 2023 में भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत परीक्षणोपरांत योग्य पाए गए हैं और जो इस दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, उन्हें उनके संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर और स्नातक उपाधि स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की कुलपति के रूप में प्राप्त अधिकारों का विनियोग करते हुए यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि हेतु स्वीकृत करती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने जीवन और आचरण में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करेंगे। I invite Dean School of Educational Studies to present the candidate respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Education, Master of Arts in Adult Education, Master of Arts in Yoga Education, and Master of Science in Yoga Education, and the graduate degree of Bachelor of Education, 4 years integrated program, Bachelor of Arts in Adult Education, and Bachelor of Arts in Yoga Education in the School of Educational Studies, and who are present in person at convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Arts and Information Sciences to present the candidate respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Arts, Journalism and Mass Communication, Master of Arts in Music, Master of Performing Arts in Theatre Arts, Master of Library and Information Science, and the graduate degree of Bachelor of Journalism, Bachelor of Fine Arts, and Bachelor of Library and Information Science in the School of Arts and Information Science, and who are present in person at the convocation admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Commerce and Management to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2023 for the postgraduate degree of Master of Commerce and Master of Business Administration, and the graduate degree of Bachelor of Commerce and Bachelor of Business Administration in the School of Commerce and Management, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct
You prove yourselves worthy of the same. I invite Dean School of Law to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in year 2023 for the postgraduate degree of Master of Law and graduate degree of Master of Law 5 years integrated course and Bachelor of Law in the School of Law and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your graduate or postgraduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. Now I invite Controller of Examination to request the Vice Chancellor to admit those students for their respective degrees in absentia. Madam, I pray that the candidates who have been examined and found qualified for their respective degrees of the Doctor of Philosophy, the postgraduates and the undergraduates in the year 2023 of various schools and who are not present in person at the convocation be admitted to their respective degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, I admit the candidates in absentia to their respective degree and charge them that in their life and conduct they prove themselves worthy of the same. Thank you, madam. I request honorable dignitaries on the dais to release the convocation souvenir. Now I invite Dean of Student Affairs to present the meritorious candidates for university medals. Madam, I present before you those students who have secured first position in the merit list of various examinations conducted by the Vishwavidyalaya in the year 2023. I request you that they be honored with the university medal. May I request our chief guest, Professor K.K. Agrawal sir, Gaur Atithi, Padma Bhushan Professor R.C. Shokti sir, Honorable Chancellor Sri K.L. Berwal sir, and the Vice Chancellor Professor Neelima Gupta ma'am to present medals to the students. Alisa Gupta, BA B.Ed 4-year integrated program. Now I am inviting Prachi Dubey, bright among the brightest. She has secured 86% marks in BSc program for her outstanding performance. Please give him a big applause. Anuj Singh Thakur, BSc B.Ed 4-year integrated program. Lakshmi Patel, BCom. Anushka Pandey,
BA LLB 4-year integrated program. Nitesh Jain, BCA. Princey Lodhi, B Farm. Aman Sahu, Believe Information Science. Anjali Jain, BFA, Bachelor of Fine Arts. Harshita Singhai, M Form. Neelima Misra, MTech Applied Geology. Palak Jain, MBA. I am inviting bright among the brightest candidate, Yogendra Singh Kurmi, who has secured 87.36% marks in MCA 3-year program. A big applause for him. Again, I am inviting a very bright candidate, Disha Kurmi, for her outstanding performance in MCOM with 86.96%. Disha Kurmi, a big applause for her outstanding performance. Manisha Vaidya, MEd. Ayushi Saini, MA, JMC. Anil Sahni, LLM. Pratibha Soni, MA, Hindi. Priyansi Yadav, MA, English. I am inviting Chitrans Kanhova, bright among the brightest. He has performed 89% marks in MA Sanskrit. A big applause for his outstanding performance. Prashant Kumar, MA Political Science. Rajkumar Dhurve, MA Public Administration. Swarnim Kanhova, MA Economics. Sonali Rajak, MA AIH. Please give him a big applause for her and his outstanding performance. Anand Dangi, MA Philosophy.
पुरुषोत्तम कुमार साहू, MA जियोग्राफी। पूजा जैन, MA यौगिक साइंस। सिमरन शर्मा, MA एंथ्रोपोलॉजी। अनुवा अहलुवालिया, MA क्रिमिनोलॉजी। सुपर्णा खरे, MA सोशियोलॉजी। सत्यम नामदेव, MA म्यूजिक। वंशिता जैन, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क। भास्कर सिंह ठाकुर, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन थिएटर आर्ट्स। शिवरंजन चौधरी, MA एजुकेशन। पूजा ठाकुर, MSc फिजिक्स। आ गई है। जागृति रानी, MSc बायोटेक्नोलॉजी। Again, I am inviting a very bright candidate among the brightest, Ritu Boharpi. She has secured 86.17% in MSc Microbiology. A big applause for her. Mahima Jain, she has also performed 87.31% marks in MSc Mathematics. She is bright among the brightest. Please give him a big applause for her outstanding performance. Ashutosh Mishra, MSc Zoology. I invite Surabhi Suman Patel for her outstanding performance in MSc Botany with 86.65%. A big applause for her excellent performance. Pooja Kumari, MSc Forensic Science. ज्ञानित जॉन कुशवाहा, MSc Chemistry. धनश्री बवांकर, MSc Anthropology. Thank you, madam and dignitaries. Thank you so much, respected dignitaries on the dais. मैं यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। दीक्षा दो स्वर और दो व्यंजन से मिलकर बना है। अंतिम जो स्वर है वो आ है, जिसका मतलब होता है आनंद। ज्ञान से आनंद का मिलन। इस
सभागार में बैठे हुए सभी सुधी जनों से मेरा निवेदन है कि दीक्षांत समारोह में पदक पाने वाले हमारे विश्वविद्यालय के इन अकादमिक अग्रदूतों का जोरदार तालियों के साथ एक बार सम्मान करें और उन्हें आनंद पहुंचाएं। Now I request Honorable Guest of Honor, Professor R.C. Sopti sir, a renowned educationist and biologist, the Gohar Atithi of the ceremonial occasion of 32nd Convocation, to address the August gathering. Honorable Dr. K.K. Agarwal, the Chief Guest, the Chancellor of this University, the Vice Chancellor of this University, members of Academic Council, faculty members, non-teaching staff और विद्यार्थियों, मैंने कुछ लिखा था पर मैं टाइम के अभाव से पढ़ूंगा नहीं, पर दो चार बातें करूंगा सिंपल, क्योंकि फ्लाइट है सबकी। आज बहुत खुशी का पर्व है। आप सब लोग बड़े तैयार होके आए, बड़ी आकांक्षाएं लेके आए कि आज आपने कुछ अचीव कर लिया और किया भी है। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की और आज ये शुभ दिवस आया कि आज इस परिसर में ऐसे लग रहा है कोई पर्व हो रहा है। होता ही पर्व है ये, शिक्षा का पर्व जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बात कर रहे थे चांसलर साहब, ऑनरेबल चीफ गेस्ट अग्रवाल साहब से, कि भारत की सभ्यता भिन्न भी है और एक भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कुलपति था तो वहां वो ट्रेडिशनल ड्रेस थी, पर जैसे ही पीपीआई यूनिवर्सिटी गई तो हमें भी इस ड्रेस कोड चेंज करना पड़ा। वहां का और यहाँ का देखिए कितना भिन्नता है, पर सब एकाग्रता है। ये भारत की एक अच्छी सभ्यता है। ये मत भूलिए कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी, बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक थी। और हमारा जो हमारी सभ्यता में एक चीज बहुत ही कॉमन थी कि हर चीज में विज्ञान है। हमारा जीने का ढंग, रहने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, कुछ भी ले लो, सब वैज्ञानिक था। और इसीलिए सोशल साइंस को भी साइंस कहती है। और उसकी एक मेन क्या बात थी कि आपको क्या शिक्षा लेनी है, किसके लिए, कि जीवन क्या है और जीवन का ध्येय क्या है, उसके बारे में जानना है। और उसको जानने के लिए उन्होंने एक हमें चीज दी कि अगर आपने कुछ जानना है अपने बारे में भी तो प्रकृति से जानिए। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर है और उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से ढंग दिए। सबसे बढ़िया ढंग दिया, भा भूमि गा गगन वाह वायु आग्नि नानी, हम सब पंचभूतों के बने हुए हैं। आ अग्नि, भा भूमि, आग्नि, गगन, वायु। और इसका क्या है कि हमारे जीवन इन्हीं पंचभूतों को बना है। चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह, कोई भी हो, सब इसी का बना है। तो इसका मतलब हम भी भगवान है, हम भी भगवान है, क्योंकि हम भी उसी के बने हैं। हम ब्रह्म है, पर हम भ्रम में रहते हैं कि आज मैं पद्मश्री हूं, बड़ा खुश होता हूं। अरे नहीं, ये उस भगवान की देन है, वो पंचभूतों की देन है, जिससे राम बना,
पर हम सभी एक जैसे होते हुए भी हम अपने आप को अलग समझते हैं। क्यों? कि हमने अपने जीवन शैली को ऐसे बनाया कि हम कैसे संसार की, मानव की और नेचर की सेवा कर सकते हैं। उस नेचर की सेवा करने के लिए हमें प्रतिबिंब दिए गए। प्रतिबिंब दिए गए कि जितने देवी देवता हैं सबके वाहन एनिमल है, तो इसलिए वो भी प्रकृति का पार्ट है। जितने रीति रिवाज हैं उनमें पौधे वर्ते भी, मैडम ने हमें भी पौधा दिया, हमने उनको जल भी दिया। क्यों? इनके बगैर जीवन नहीं है। तो ये हमें दर्शाया गया। हम हवन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, 17 पॉइंट की बात करते हैं। अरे हमारी सभ्यता तो सस्टेनेबल पे ही बेस्ड थी, हर जगह सस्टेनेबिलिटी है। जीरो हंगर की बात करते हो, पानी की बात करते हो, एग्रीकल्चर की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो। अरे भाई ये तो हमारे कल्चर में ही सारा था। क्या खाना है, क्या पीना है, कश्मीर में क्या खाना है, स्वस्थ रहो, कन्याकुमारी में क्या खाना है, स्वस्थ रहो। पर आज हमें गुम कर दिया पिज्जा ने, न्यूडल ने और पता नहीं क्या क्या ने गुम कर दिया। और इसलिए ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि पूछो। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पंजाब में सरसों का साग खाते हैं, बस मैडम सरसों का साग खाते हैं। कभी सोचा क्यों खाते हैं? क्योंकि सरसों का साग एब्जॉर्ब द मेटल पॉइजन्स, और मक्के की रोटी फाइबर दे देती है, आपका पेट साफ हो जाता है। जबकि मीट खाओगे, नूडल खाओगे तो जाके कोलन में स्टक हो जाएगी, फ्री रेडिकल पैदा करेगी, म्यूटेशन होगी और आपको कैंसर होगा। तो हमारी सभ्यता कितनी सुंदर है, पर आज हम उसको भूल रहे हैं। ये नहीं कि भारत ने विज्ञान में तरक्की नहीं की, भारत की शिक्षा इंटीग्रेटेड होती थी। आज हम वोकेशनल प्रोग्राम कहते हैं, उस समय हर विद्यार्थी को किसी ऋषि के पास जाता था तो 65 कलाएं सीखनी पड़ती थी, जिसको वोकेशनल प्रोग्राम कहते हैं। आज वोकेशनल कहते हैं, उसमें कलाएं कहती थी, लोहार भी था, तरखान भी था, क्या नहीं था, सब था। और इन सब को दर्शाने के लिए राम जी आए, जिसको बहुत याद किया हमने। राम तो हमें रमाए हुए हैं और उन्होंने मर्यादा दिखाई कि जब जीवन शैली में रहना है, संसार की सेवा करनी है, तो हमें किस मर्यादा में रहना चाहिए। कृष्ण जी ने बताया कि किस मौके पे क्या कर्म करना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको मारने में भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो इस धरती पे बर्डन है, बोझ है, उनको रिमूव करना चाहिए। और सभी चीजों का निचोड़ दे दिया गया गुरु ग्रंथ साहब ने। उसे क्योंकि हर आदमी रामायण नहीं पढ़ता, महाभारत नहीं पढ़ता, गीता नहीं पढ़ता, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में सबकी पानी दे दी, कबीर जी भी दे दिए, सब दे दिए। कितना सुंदर है हमारा ये कल्चर। पर आज उस कल्चर को भूले, उसके मत भूलिए। आज हमने बहुत तरक्की की, चंद्रमा तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, कहां नहीं पहुंचे। कोविड ने दिखा दिया कि हमारी सभ्यता क्या है, हम कैसे स्वस्थ रहे। जो भी कोविड के है वो हमारे कल्चर में थी। हाथ जोड़ना, सूर्य नमस्कार करना, अरे ये सब उसके विटामिन डी के लिए था। कभी सोचा आपने? तो इसलिए दोस्तों, आज हम उस युग में हैं जिसमें एआई आया, मशीन लर्निंग आई, 3D प्रिंटिंग आई, क्या क्या नहीं आया। ये जरूरी है, ये जरूरी है, हमारे कल्चर में थे। हमारी प्लास्टिक सर्जरी इंडिया ने डिफाइन की, जो एविएशन लॉज हमने दिए, इकोनॉमिक्स के लॉ हमने दिए, फिजिक्स के लॉ हमने दिए। आज संसार कहता है कि न्यूटन लॉ से पहले हम जानते थे, वो तो बाद में आए। और हमें ऐसी एवोल्यूशन दी गई जो तो हमारे कल्चर में ही है। मत्स्य भगवान सारा देखिए, जैसे जैसे कल्चर बढ़ता है वो सारी हमारी एवोल्यूशन है। हमने भगवान बना दिए, सारे वो इसी में है। तो दोस्तों, ये नई पीढ़ी जो है, इसके लिए एक चैलेंज है। क्या हमने आगे बढ़ना है
कि यहीं रुक जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग सब बहुत अच्छे हैं, पर इसको अपनी सभ्यता के साथ यूज करिए, अपने कल्चर के साथ यूज करिए, तो आप आगे बढ़ोगे। क्यों? हमें क्या चाहिए? सारा ग्लोब क्या देखता है? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। दिस हैड बीन आवर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लाइफ, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। पर कोई भी अकेला नहीं हो सकता। You cannot have a peace if you don't prosper, or you cannot have happiness if you don't prosper. So three things have to work together. And how can you do it? How can you be one in one? अभी बताया कि बहुत अच्छा इस बच्चे ने किया। कैसे किया? Because you have to introspect. सोचिए, स्वाध्याय करिए कि मैं क्या करूं, कि मेरे संसार मेरे जाने के बाद भी इंट्रोस्पेक्ट करिए और तरीका ढूंढिए कि कैसे करूं। राम ने अपना तरीका ढूंढा कि मैं संसार को वन में जाके सुखाऊं। कृष्ण ने अपना तरीका ढूंढा, गुरु गोविंद सिंह ने अपना तरीका ढूंढा, गुरु नानक ने अपना तरीका ढूंढा। तो आप भी ढूंढिए। दैट्स ए इनोवेशन, सो दैट इन द लॉन्ग रन यू कैन इंस्पायर, you can inspire, you can one in millions or billions or trillions. That is a lesson for you. Use 3 eyes every moment. पर एक ख्याल रखना, आज की जो आपकी अचीवमेंट है अपनी नहीं है, अकेले की नहीं है, ये 4 दीवारी की नहीं है, ये उस पेरेंट की है जिन्होंने भूखे रह के भी आपको यहाँ पहुंचाया। उस पेरेंट को मत भूलिए, उस माता को मत भूलिए जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि फादर ने तो एक स्पर्म दिया, कुछ नहीं दिया, 23 क्रोमोसोम दिए, पर मदर ने तो 9 महीने आपको पेट पे खाना भी दिया, संस्कार भी दिए, सब कुछ दिए। तो माता के मुकाबले कोई नहीं। आज मुझे सबसे खुशी है कि आप आज के जिन्होंने मेडल लिए उसमें मैक्सिमम हमारी कन्याएं थी। और मेरे एक एक्सपीरियंस है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे डायरेक्टर यूआईटी की पोस्ट खाली हुई, तो डायरेक्टर जाने वाले चाहते थे मुझे एक्सटेंशन मिल जाए जो मैं नहीं दे सकता था। तो नेक्स्ट लेडी थी, उसको डायरेक्टर बनाया। मुझे बहुत उस जाते हुए डायरेक्टर साहब ने कर्ज किया, पर आज वही लेडी आज वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी है। यही हमें गर्व है, यही गर्व है कि अगर विमेन को कोई दे दिया। और ये इस विश्वविद्यालय में 5वीं बार आया हूं, 5वीं बार आया हूं, पर जो चीज अब देखी, जो मॉडर्न चीजें अब देखी, अपनी सभ्यता के साथ देखी, शायद पहले नहीं थी। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे कुलपति महोदय नीलम गुप्ता जी को जाता है। मैं इनको जानता हूँ पुराना, ये बहुत डायनेमिक है, सोचते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं, जैसे इनकी रिपोर्ट में आया, और हम सबको इंस्पायर करते हैं। बहुत बहुत मुबारक सबको। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your blessings and words of wisdom. Now I request Honorable Chief Guest, Professor K.K. Agarwal, sir, the President of South Asian University, New Delhi, to deliver convocation address of 32nd Convocation of the University. The dignitaries and guests of the 32nd Convocation of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya Sagar, my very personal friend Padma Shri Professor R.C. Sobti, guest of honor of the convocation, Shri K.L. Barwalji, distinguished Chancellor of this university, my very committed and dedicated Vice Chancellor of the country, Dr. Nilima Gupta, my most favorite Vice Chancellor, honorable members of the University Executive Council, members of the Academic Council, Registrar of the University, all respected dignitaries of Sagar, journalist fraternity from print and electronic media, dear students who have been awarded with various medals and titles, and all the members of the university family. It gives me immense pleasure in addressing the august gathering on the occasion of this convocation ceremony of this glorious university.
My dear students, the day belongs to you. And my first and foremost part of the convocation is to congratulate you. Congratulate you for your efforts, for your recognition, for your success, and give my best wishes to you for your very perspective, prosperous future careers in personal areas and professional areas. Congratulations to you all. I am grateful to Professor Nilima Gupta for giving me this opportunity to interact with you for a short while. We were looking for this opportunity for quite some time, but somehow the time kept on evading. Friends, in the last 20-25 years, I think I might have addressed 50 convocations, and a question came to my mind many a times, इसको दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? So then I started looking for the difference between Shiksha and Diksha. I came across several definitions, but the best definition which I liked is Shiksha prepares you for solution of the known problems. That is your examination system. But Diksha prepares you for the solution of unknown problems, which you don't have, which none of us know, but we hope we are preparing you for those unknown problems to be solved in life also. Because life will never tell you, problem will never tell you, I'm coming tomorrow morning, and it will come. And you will have to solve it. That's what the citizenship is, that's what the good citizens are, and we are preparing you for that. I hope the university has done you enough in that direction, because today it's not the content which is very important, it is the learnability of the content which you do not know is more important. That is why most of the prospective employers today do not believe in testing what you know. They believe in trying to find out, would you be able to learn something which none of us know so far? And that property you have to learn today while in the university, which is even more important than the content. I have to salute and appreciate the spirit of Dr. Harisingh Gour standing here, who is singularly responsible for creation of this university. If you look to his life sketch, I am sure most of you have read it, I think you will find very few parallels. And if you have to identify some properties, number one, it was a fine mixture of various subjects. He never confined to a single subject. Today we talk of multidisciplinarity, but look at any senior person in the earlier days, you will find them all multidisciplinary. Whether it was Jagdish Chandra Bose, whether it was Newton, whether it was C.V. Raman, whether it's Harisingh Gour, whosoever it is, they were multidisciplinary. So I would like you to feel, when we talk so much about multidisciplinarity in education, just look to the fact that these people could do great things because they were multidisciplinary. You cannot confine yourself to a single discipline, number one. Number two, ultimate aim has to be good of the society. Unless you have that aim, nothing works. I know when Professor Kalam came to our university, and one teacher wanted an autograph, he wrote, I still have that photocopy, he wrote, if you have integrity, nothing counts. If you do not have integrity, nothing counts. This country was known for its values. We never sacrificed our values. My good friend was talking about Bhagwan Ram, Bhagwan Krishna and all that. They all stood for values. And values are also contextual and temporal. It's not something permanent which is values. Values change with time, but change for the good. And we have to be changing in mind and be sure what are our values. I always remember an incident on such occasions. I went to then East Germany some 40 years ago for a keynote address. And when the Vice Chancellor was taking me around on the roads of the East Germany, many of these highways were built of stone.
I said, Professor Fletcher, what have you done? Your car tires will go away very soon because your roads are not bitumen but they are of the stone. He said, Professor Agarwal, you are perfectly right, but we have intentionally done that. That increased my curiosity further. I said, why? He says, bitumen we have to get from USA, tires are made in our own country. So we don't mind replacing tires often, but save our foreign exchange. Now, whether it's a correct solution to the problem or not is not important. What is important is what is our objective, and is our solution correct within those objectives. And therefore, that is why we call, I was till recently chairman of the National Board of Accreditation, and we are focused on outcome-based education. But its content is important. But will that lead you to what you want to be? I give an example. If an architect asks me for a house, I need so much cement, so much stone, so much this, and I dump all that on the road, do you call it a house? No. House will become a house only when these things are put in a proper format, in proper perspective, in proper sequence, in proper quantity at proper times. And similarly, education is not a rubbish knowledge which has to go into your mind to be vomited at the examination hall. Knowledge is what you gather to learn to solve future things. And that is why we say outcome-based education. And a sentence which I have used maybe 10 times in convocations is, the present focus of education doesn't have to be कि मुझे क्या पढ़ाना है. It has to be मुझे बच्चे को क्या बनाना है. क्या पढ़ाना है is a teacher-centric education. क्या बनाना है is a student-centric education. And we have to do that. Friends, National Board of Accreditation, we were concentrating on outcome-based education, and somebody would say this, somebody will say that. And I remember when I was in Stanford University, they told me, Professor Agarwal, we do not measure our performance by what our graduates are at the time of graduation. We measure our performance what they have become 20 years after graduation. Did we prepare them to succeed subsequently in life all the time? Another university told me even a more beautiful sentence. They said, sir, we test ourselves. Can we have one of our alumni within 25 years to be so important that we can invite him to address our convocation? That will be our measure of success. If we can do that, that's our success. And friends, why I'm trying to tell you this is, you have a lighthouse in the name of the university. If you are inspired by Dr. Harisingh Gour's life sketch, I think you would have achieved much more than all what is taught to you by way of formal syllabus. And if I were have the absolute authority, I would say, if a university produces one Harisingh Gour every 5 years, I will give him A+. Irrespective of anything else, because it's not the quantity which matters, it is the value which matters and which is important. I congratulate your university, particularly the Vice Chancellor, Dr. Nilima Gupta, for so many achievements of the university in a short span of time. You may be surprised, my dear students and teachers. I am not, because I know her and I expected it. And I was sure that she would do it. So it's not a surprise to me. It would have been a surprise if it would not have been done. And I'm very sure in the coming years, things will take much more swifter shape and will come much more positive things. Friends, in our education system, one thing which has crept in is too much focus on the answers. We believe we'll set the question paper as strong as I can. Our whole society is a rejection society. IAS का exam, 3 लाख में से 100. JEE का exam. We are rejection based society. Actually, it has to be knowledge based society. And therefore, it's not the questions which raise the bar of the society. It's not the answers which raise the bar of the society. It is the questions which raise the bar of the society.
We have to encourage students asking questions. Today we say lack of innovative research because we do not encourage our students to ask us questions. One professor from abroad told me, Professor Agarwal, we are proud of your students who come here for PhD, but we take 6 months to change their attitude to ask their seniors questions which may be critical of the seniors also. See, in science, if you do not criticize what others have done and you keep on worshipping that, you will not advance. You will advance only and only when you learn to question and then sort the answer. I was reading the biography of a Nobel laureate physicist, Dr. Rabi. When he was surrounded by media people and asked, whom will you give credit for your Nobel Prize? He says, my mother. The media people asked, is she a scientist? He says, no. He says, then how do you give her the credit for your Nobel Prize? He says, when other children of the locality used to go to the school and come back from the school, their mothers would ask, what did you learn at the school? My mother would ask, did you ask a good question from a teacher today? That was a standard question which my mother would ask me every day when I come back from the school. Therefore, to impress my mother, every evening I used to find a good question, which I could ask my teachers next day and thereby learn the answers to that. And that had made me an innovative researcher today for that level. Friends, following on, I read the psychologist's paper. He says a child of 2 years or 3 years old child asks about 73 questions per day. It looks mind-boggling to me, but then there's the research. 73 questions per day, and most of these questions will be trivial. Mama, why do you want me to wear the clothes? Why don't you allow me to go to the stairs? Why don't you allow me to touch the fire? Whatever. But 73 questions per day. And I am almost certain we do not allow a student to ask 73 questions from primary to PhD. And then we want innovation. And then we want creativity. We will have to change this and bring that to fruition. Friends, time is running out, so I'll have to stop just by saying 2 more sentences. Many a time we start saying he's lucky, therefore he got success. I quote Richard Bass, who said, if you are given a wish to do that work, you are also given the power to do that work. Now it is for you to use the power or not use the power. And again, the psychology said there are 2 kinds of persons who are born in this world. One is who say I can, and others who say can I. And these 2 make the whole difference in the world. So I request my young students, always say I can. Do not question yourself, can I? And that will be my lecture to you. Friends, lastly, by virtue of the fact that I am here today on the invitation of your dynamic Vice Chancellor, I think I have become one of the gurus for the purpose, and therefore I have a habit of asking Guru Dakshina at the convocation, and I have a few expectations from you, which I'll read quickly. I wish you to understand that discomfort is the price of legendary. I wish you to understand that life is short, so today is the time to do big things. I wish you to understand that success is measured neither by what we take nor by what we get, just by what we give and who we become. I wish you to understand that your I can is exponentially more important than your IQ. I wish you to understand that leadership is less about a title and the size of your position and so much more about your mindset. I wish you to have much less ego and much more humility. Less being busy, more productivity. Less entertainment, more education. Less selfish, more selfless. I wish you to help create a world of victors versus victims, encouragers versus deniers,
and dreamers versus destroyers, because how high you fly is derived from how big you think, and how iconic you become is caused by how deeply you love. I wish you to remember that every giant leap for mankind resulting from a technological advance requires a commensurate step in the opposite direction, a counterweight to ground us in the humanity. Thank you very much and wish you all the very best. So, thank you. Thank you so much, sir, for your blessing and insightful convocation address. Now I request Honorable Chancellor Sri K.L. Berwalji to deliver the presidential address on the occasion. आज के इस 32वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय के अग्रवाल साहब, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री सोबती साहब, विश्वविद्यालय की कुलगुरु आदरणीय नीलिमा गुप्ता जी, कुल सचिव महोदय, एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी महाविद्यालय के आचार्य, प्राध्यापकगण, अन्य स्टाफ सदस्य और जिन विद्यार्थियों ने आज उपाधियां प्राप्त की है, सभी ऐसे विद्यार्थी एवं अन्य समस्त प्रबुद्धजन, प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम सब एकत्र हैं। सोबती साहब ने और अग्रवाल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं, और क्योंकि समय की मर्यादा है, सभी को जल्दी जो है जाना है, इसलिए मैं केवल संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि यद्यपि सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह एक होता है साल भर में, लेकिन डॉक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय का ये जो समारोह है, ये अपने आप में अलग है, और अलग इसलिए है कि यह विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौड़ की कर्मभूमि है, तपोभूमि है। उन्होंने जिस मेहनत से, लगन से यह विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया कि वो कई गुणों के धनी थे, अर्थात सर्वमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिक्षाविद भी थे, कानूनविद भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कई उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए, और साथ ही साथ धुन के पक्के थे। तो ऐसे व्यक्ति ने यहाँ सागर में जो विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, आज वहां पर अपन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए इसका अलग महत्व है, विशेष महत्व है। गौड़ साहब जो है, इसके पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के, नागपुर विश्वविद्यालय के काफी लंबे समय तक वाइस चांसलर रहे, और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के बाद में यहां आकर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, और बहुत ही कम साधनों से। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े दानवीर थे, कि ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित की हुई अपनी पूरी संपत्ति
वो इस महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय को दान दे दी, तो सबसे बड़े दानवीर जो हैं, और दानवीर भी शिक्षा के लिए उन्होंने जो किया वो निश्चित रूप से आज हम सबको याद करना चाहिए, और ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं। आदरणीय कुलगुरु जी ने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ तकनीकी कोर्सेज शुरू किए हैं, कुछ व्यावसायिक कोर्स शुरू किए गए हैं। निश्चित रूप से उनसे आगे जाकर के आपके भावी जीवन में लाभ होगा। जैसा कि बताया कि ये जो है शिक्षा की समाप्ति नहीं है, दीक्षांत, बल्कि अब आप जो डिग्रियां आपने प्राप्त की हैं उसके बाद में वास्तव में अब परीक्षाएं तो अब शुरू होगी आपकी। आज आपने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, उपाधियां प्राप्त की हैं, लेकिन अब आपको जिस सेवा में जाना चाहोगे वहां जाकर के आपको अन्य परीक्षा देनी पड़ेगी, और आपका वहां चयन जो उस परीक्षा के माध्यम से ही होगा। तो आपको कई परीक्षाएं अब आगे भावी जीवन में और देनी पड़ेंगी, और केवल ये परीक्षाएं नहीं बल्कि आपके भावी जीवन में आपको दिन प्रतिदिन, चाहे आप किसी भी सेवा में रहें, किसी भी व्यवसाय में रहें या कोई भी कार्य करें, जीवन भर आपको अनेक परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और जो यह ज्ञान आपने अर्जित किया है वह ज्ञान जो है आपको उसमें सहायक होगा। शिक्षा के साथ साथ संस्कार और पात्रता अति आवश्यक है। डिग्री लेने के बाद में भी यदि संस्कार नहीं है, पात्रता नहीं है, तो वह व्यक्ति भावी जीवन में सफल नहीं हो सकता। अभी आज ही हम बात कर रहे थे कि जिसने ज्यादा डिग्रियां प्राप्त कर रखी है वो कुछ अर्जित नहीं कर रहा, और उसी का छोटा भाई या पड़ोसी जो कोई डिग्री नहीं ली, उसने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, वो उससे ज्यादा धन अर्जित करता है, क्योंकि उसमें कुछ पात्रता है। और जो डिग्रियां ली है, उसने डिग्री प्राप्त की है लेकिन उसमें पात्रता नहीं है। तो इसलिए विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ साथ ही यह आवश्यक है कि उस विद्यार्थी की पात्रता का, संस्कारों का ध्यान रखा जाए, और यहां से जब वो निकलता है तो वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान हो, अच्छा व्यक्ति हो, ताकि वो जीवन में सफल हो सके। मैं राजस्थान से आता हूं, कोटा में देखता हूं कि यहां से पूरे, बल्कि राजस्थानी क्या पूरे देश भर से मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चे कोटा में आते हैं, लाखों बच्चे आते हैं। लेकिन हर सप्ताह में कोई न कोई समाचार मिलता है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी इसी 8 तारीख को ही एक बच्चे ने जो जी की तैयारी कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ी विचारणीय बात है। और हम जो शिक्षाविद इस प्रकार के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हैं, इस संबंध में विचार करना चाहिए कि क्यों आखिर बच्चा जो है जिसको आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजा था, वो 12-6 महीने बाद में उसका संदेश आता है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ये घर के संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो जहां वो अध्ययन कर रहे हैं वहां के संस्कारों की कमी है, वहां उसकी साल संभाल की कमी है। निश्चित रूप से टेंशन आता है, टेंशन होता है, और जब परीक्षाएं आती हैं तो कितना इंटेलिजेंट विद्यार्थी उसको भी टेंशन होता है। और देखने में आया है कि कई बार जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, अच्छी पढ़ाई की है, बाकी वास्तव में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट टॉपर्स में से, उसको भी टेंशन आता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे संस्कार क्या है। जब भी अपन कोई कार्यक्रम करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं कि सब विघ्न जो दूर हो जाएंगे। तो ये जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की कमी का नतीजा है, क्योंकि वहां जब आपने बिहार के बच्चे को, कलकत्ता के बच्चे को वहां भेज दिया कोटा में, वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपनी व्यथा जो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन आप यदि इस प्रकार के उसके संस्कार बचपन में दिए हैं
तो हो सकता है जो ही उसको डिप्रेशन आए तो वो कहीं गणेश जी को याद करें, कहीं सरस्वती को याद करें, कहीं जय बजरंगबली को याद करके उसका जो है वो मिट जाता है, अपना देखा है। लेकिन आज इस प्रकार के संस्कार नहीं है। हमारे कोटा में एक शिक्षिका ने ये कह दिया कि मैं सरस्वती जी की फोटो नहीं लगाऊंगी, कि सरस्वती जी का क्या योगदान है। तो आज इस प्रकार के जो कल्चर बढ़ता जा रहा है वो संस्कारों की कमी के कारण से, अपना जो इतिहास है, संस्कृति है, उसके विपरीत जो धारा बह रही है, उसका नतीजा है कि हम संस्कार नहीं दे पाते। जो आज बचपन से जो है भगवान राम के बारे में सौती साहब ने बड़ा विस्तार से बताया, तो इस प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति का निर्माण है वो इन संस्कारों के माध्यम से होगा। तो इसलिए हम शिक्षा के साथ साथ में बच्चे के संस्कारों का भी ध्यान रखें। अभी 8 तारीख को ही क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित हुआ। उसमें विभिन्न विधाओं में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए उनको अवार्ड दिया गया। पहला जो है वो समारोह आयोजित किया गया। उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के विद्यार्थी जो पढ़ते ही पढ़ने वाले थे या जो अभी भी जो बिल्कुल यंग है, उन्होंने इस प्रकार की इनोवेशंस की। तो उन इनोवेशन से निश्चित रूप से सबको लाभ मिले, तो ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे और विश्वविद्यालय जो है विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उन्नति कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और आगे जाकर के हम और जो है विकास करेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति करेंगे। आदरणीय अभी कुलगुरु जी जो अपने जो है उन्होंने विस्तार से बताया, तो उनकी चर्चा अपने बाद में करते रहेंगे क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं। तो मैं आज पुनः जिन्होंने उपाधियां प्राप्त की हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप भावी जीवन में सफल हों, आप अच्छे इंसान बने और जहां भी जिस क्षेत्र में जाएं आप समाज का, देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। पुनः बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। Thank you so much, sir, for your blessing and inspiring words. सर ने ठीक कहा कि असली परीक्षा अब वास्तविक जीवन में होगी। इससे संबंध में यजुर्वेद में बिल्कुल ठीक लिखा है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम राष्ट्रजन राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा जागृत और जीवंत रहें। हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी इस लाइन को यजुर्वेद की दोहराते रहते हैं। धन्यवाद सर। ज्ञान, अनुशासन और समर्पण की इस प्रखर सभा को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करने वाले हमारे अतिथियों के सम्मान में हम करतल ध्वनि के साथ अपनी स्वीकृति व्यक्त करेंगे। अब समय है हम अपने विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह के यादगार लम्हों को अपने माननीय अतिथियों के स्मृति का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसके निमित्त हम अपने अतिथियों के सम्मान में विश्वविद्यालय की ओर से उत्तरी, श्रीफल और स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करना चाहते हैं। इस क्रम में मैं कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय की ओर से ये भेंट समर्पित करें। कुलाधिपति महोदय को माननीय कुलपति महोदया विश्वविद्यालय की ओर से भेंट समर्पित करती हुई ये बहुत सुंदर समय है और इसी क्रम में मैं कुलपति महोदया से आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी का भी विश्वविद्यालय की ओर से सत्कार करें। आप करतल ध्वनि के साथ इस सम्मान के सहभागी बने। ये विलक्षण अवसर है जब ज्ञान को ज्ञान सत्कार कर रहे हैं। साथ ही निवेदन माननीय कुलपति महोदया से है कि हमारे सम्माननीय गौर अतिथि पद्मश्री जी का
उत्तरी श्रीफल और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर नवीन कांगो जी से निवेदन है कि तेरा तुझको सौंपिया के भाव से माननीय कुलपति महोदया जी का सम्मान करें। ये माननीय कुलपति महोदया के यशस्वी कार्यशैली के प्रति हम सबका एक अनुग्रह है, हमारा कृतार्थ भाव है। अब मैं माननीय कुल सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्राप्त कर सभा के प्रति औपचारिक आभार ज्ञापित करें। I request Honorable Chancellor to declare the closure of the convocation. I declare the convocation closed. सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलाधिपति श्री कन्हैया लाल बेरवाल जी की पावन उपस्थिति और आशीर्वचन के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट कर रहा हूं। आज के इस समारोह में दीक्षांत भाषण प्रदान करने वाले प्रख्यात शिक्षाविद और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल जी के प्रति पूरा विश्वविद्यालय परिवार कृतज्ञ है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। सम्माननीय गौर अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर आरसी सोबती जी के सारस्वत सानिध्य में के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। विश्वविद्यालय की मुखिया और हम सबकी प्रखर प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट कर रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, आप सभी के प्रति अपना आभार निवेदित कर रहा हूं। सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षकों, नगर से पधारे गणमान्य अतिथियों और जन प्रतिनिधियों के अविरल सहयोग और स्नेह के प्रति मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं के प्रति मैं अपना आभार निवेदित कर रहा हूं। दीक्षांत समारोह के आयोजन के निमित्त गठित सभी समितियों के समन्वयक, उप समन्वयक और सदस्यों को उनके अथक और त्रुटिहीन कार्य संपादन के लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज के इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से खास बनाने वाले विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिष्ठातागण, विभिन्न विभागों के अध्यक्षगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं और प्रिय छात्र छात्राओं को उनकी सक्रिय सहभागिता हेतु आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज के इस आयोजन को इस रूप में आयोजित करने में तकनीकी और भौतिक सहयोग प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के आईटी सेल, EMMRC और यंत्री विभाग के सभी साथियों का भी हार्दिक आभार। विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले अपने प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनकी उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। साथ ही अपने इन अकादमिक सितारों के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अंत में इस आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना सहयोग करने वाले सभी का मैं हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय गौर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुल सचिव महोदय। अब पूरी सभा के लिए बस छोटी सी दो सूचनाएं हैं कि राष्ट्रगान पहले होगा, उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी, हम सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ शोभा यात्रा में चल रहे माननीय अतिथियों के प्रत्येक कदम ताल को अपने तालियों की लय में पिरोएंगे। साथ ही जब तक हमारी शोभा यात्रा सभागार प्रांगण से बाहर नहीं चली जाती, हमारे अतिथि, हमारे विद्यार्थी अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। अब अवसर है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सम्मानीय अभ्यागतों, ये अत्यंत गौरव और आह्लाद का विषय है कि डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह अत्यंत गरिमापूर्ण विधि के साथ यहाँ संपन्न होता है। अब अवसर है दीक्षांत समारोह की विद्वत शोभा यात्रा के प्रत्यावर्तन का। शोभा यात्रा में सबसे पहले कुलाधिपति महोदय रहेंगे, उसके बाद कुलपति महोदया, सभी लोग खड़े रहेंगे शोभा यात्रा में और करतल ध्वनि के साथ करेंगे। सारे लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। फिर मुख्य अतिथि महोदय, गौर अतिथि महोदय, फिर क्रमशः कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, परीक्षा नियंत्रक महोदय और आखिर में विश्वविद्यालय ध्वज के साथ कुल सचिव महोदय प्रस्थान करेंगे। इस गरिमापूर्ण क्षण को, इस शोभा यात्रा को अपने सभागार से विदा करते समय अपने स्थान पे खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ विश्वविद्यालय की इस अकादमिक महत्व के, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की इस विद्वत शोभा यात्रा का प्रत्यावर्तन का हिस्सा बन रहे हैं। हम निरंतर तालियों के साथ हम अपने माननीय अतिथियों को, कार्य परिषद के माननीय सदस्य गणों को, विद्या परिषद के सदस्य गणों को हम विदा कर रहे हैं। साथ ही एक बार पुनः निवेदन है कि शोभा यात्रा जब तक प्रांगण से, सभागार प्रांगण से बाहर नहीं चली जाती, हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सबसे आखिर में विश्वविद्यालय ध्वज के साथ माननीय कुल सचिव महोदय सभागार से प्रस्थान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। दो जरूरी सूचनाएं और हैं आप सबके लिए। जिन विद्यार्थियों को यहाँ मंच से मेडल प्रदान किए गए हैं, वे लोग मंच के पीछे आके वो बच्चे मेडल बॉक्स जो उनका है उसको प्राप्त कर लेंगे। और फोटोग्राफ्स के लिए नंबर नोट करें 9425171003। श्री गोविंद सरवैया जी 94